Hi friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video in which we are going to discuss the sample answer of one of the latest cue cards. And the cue card is talk about a person whom you admire or a person you admire the most. The cues can be who this person is, how well you know this person, what qualities he or she has, and why you admire him the most. And obviously there are so many people that you must admire for different reasons, but we have to talk about one only. And I bet you can talk about your grandfather, you can talk about your father or any of your uncles, or undoubtedly you can choose a celebrity as well, saying that you really admire and follow him or take him as your role model. And as you know that I always discuss the idea behind the scene in the regional language Hindi, so I'll quickly share what we can talk about and then we will move ahead and check out the sample answer of this cue card. मैंने इस क्यू कार्ड के लिए कुछ भी नया चूज नहीं किया है. As usual, I recommend you to go ahead and figure out as many cue cards for which you can have the same idea. So this one would be something like that कि अगर आप ऐसा किसी पर्सन के बारे में ऑलरेडी क्यू कार्ड बना चुके हैं, उसी को यहाँ पर फिट कर दीजिए और बना दीजिए दैट दिस इज़ द पर्सन दैट होम यू एडमायर. वहाँ पर हमने पहले भी बात कर रखी है एक इंटेलिजेंट पर्सन की, हमने क्यू कार्ड में हेल्पफुल पर्सन की बात कर रखी है. तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम क्लब अप करके ये क्यू कार्ड भी बना लेंगे द पर्सन यू एडमायर. और इसके लिए मैंने चूज़ किया है अपने ग्रैंडफादर को. ग्रैंडफादर के बारे में हमने कहा था कि वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज पर्सन है. और इस वजह से आप उन्हें बहुत ही रिगार्ड करते हैं क्योंकि इतनी एज में भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंड एनर्जेटिक है, इनफैक्ट आपसे भी ज़्यादा हैं. ऐसे क्यू कार्ड्स को डेवलप करने का बेस्ट आइडिया यही रहता है कि आप 3-4 क्वालिटीज़ अपने माइंड में रखिए और एक एक करके उन्हें ब्रिंग करते रहिए और डेवलप करते रहिए. ऐसा ना हो कि एक ही लाइन में और कॉमर्स के साथ अलग अलग क्वालिटीज़ बोल दें और बाद में आपको डेवलप करने के लिए कुछ मिले ही नहीं. तो यहाँ पर उनकी हेल्पफुल नेचर के बारे में बात कीजिए कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, कभी भी किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते. इनफैक्ट वो एक सोशल वेलफेयर ग्रुप के मेंबर भी हैं जहाँ पर जिस तरह से भी हो सके वो दूसरों की हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर उनकी हेल्पफुल नेचर की बात हो गई. नाउ वी कैन टॉक अबाउट हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कि वो बहुत ही नॉलेज पर्सन हैं, वेल लर्नर्ड हैं, बहुत उनको नॉलेज है हर एक चीज़ की. आपको कभी भी कोई ट्रबल होती है, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टडी या कुछ और, आप हमेशा उनकी हेल्प लेते हैं. इनफैक्ट आप ही नहीं, सभी कम्युनिटी मेंबर्स भी उनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर मानते हैं. इसी वजह से कम्युनिटी के भी जब कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उन्हीं की एडवाइस को सब एक्सेप्ट करते हैं. और यहाँ पर आप एक एग्जांपल प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक पहले भी क्यू कार्ड में हमने किया था कि एक वेकेंट प्लॉट पर जहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट से और एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था डिफरेंट रिलीजन के मेंबर्स के. वो कहते थे कि यहाँ पर टेंपल बनेगा, कुछ और कह रहे थे. तो यहाँ पर ग्रैंडफादर ने एडवाइस किया कि एक पार्क बना देना चाहिए, दैट वुड बी मोर यूजफुल एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो दिस वे आई थिंक यू कैन ईजिली डेवलप द लेंथ ऑफ 1 to 2 minutes ऑफ दिस क्यू कार्ड. और इसके अलावा भी अगर आपने कुछ सोच रखा है तो वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू डेवलप द लेंथ ऑफ योर क्यू कार्ड. आई होप you have subscribed this channel and also have downloaded my application Ask Coaching, where you can find lots of IELTS programs and my paid courses. And the most important thing, अगर आपने अभी तक स्पीकिंग बूस्टर बाय नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि आपका स्पीकिंग का सारा कंटेंट इसी बुक में आपको नज़र आने वाला है. इंट्रोडक्टरी, क्यू कार्ड्स, फॉलो अप, सब कुछ सॉल्व्ड आपको इसी बुक में मिलेगा. By the end of this video, I will show you how you can download my application and purchase Speaking Booster. So let's quickly check out what the sample answer of this cue card would be like. Well, there are many people I have come across and I like, but I would like to take this opportunity to talk about the person whom I admire the most, and he is none other but my grandfather. He is in his late 70s but still look very active and young of his age. I have a very strong connection with him and I admire him for various reasons. Actually, my grandpa is a retired army officer, which makes him a very disciplined and organized person. He has a set routine of getting up early in the morning and doing every work on time. Although I'm quite young, yet I find him far more energetic than me. He always teaches me the importance of being disciplined in life to be successful.
My grandfather has many qualities, but the one that I admire the most is his helpful nature. I have never ever seen him refusing anyone. He is a member of a social welfare club for which he contributes in every possible way to help people in need. Yet another thing that makes me his great admirer is his knowledge. He is a well-learned person and have rich experience of life. I always seek his advice whenever I face any problem related to my studies. His experience always comes handy. Not only me, but all the community members also seek his advice because of his experience and intelligence. For example, lately there was a conflict regarding the construction of a temple on a vacant plot among the followers of different religions. And at this point, my grandfather recommended to construct a park which would be more beneficial and practical than a temple. Overall, because of all these qualities, I admire my grandfather the most. क्या आइल्स स्पीकिंग से डर लग रहा है ये सोचकर कि एग्जामिनर पता नहीं क्या पूछेगा? लेकिन क्या आपको पता है एग्जामिनर जो भी पूछेगा स्पीकिंग बूस्टर से ही पूछेगा। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसमें है लेटेस्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, क्यू कार्ड्स एंड फॉलो-अप्स। A book to ensure your success in IELTS speaking exams. The most trusted ebook available at special discount. Just follow 4 steps and unlock Speaking Booster book in less than 30 seconds. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you're an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!